open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make coast collide. Hold tight. Hi guys, welcome to my channel. So today I came up with this makeup look which is blue eye makeup look. और मैंने इस पर काफ़ी मेहनत की, इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की है जो आपको पूरी वीडियो में पता लगेगी। प्लस जो मैंने नायका से प्रोडक्ट्स परचेज किए थे उनका मैंने रिव्यू भी दिया है। जहाँ तक प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए उन प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू इस वीडियो में दिखाया है। सो इफ़ यू गाइज रियली वांटेड टू नो हाउ टू गेट दिस लुक प्लस the reviews which I have given, and if you really like this video how this makeup look comes out, then please hit that like button and don't forget to subscribe to my channel. So yeah, without any further ado, let's just get started. I have already moisturized my face with the moisturizer and I have applied under eye gel for my eye bags. So let's just get started with the eye makeup. Okay, so let's just prep up our eyelid. I'm taking a little bit of primer, just a little bit, a drop, and I'm applying it in my eyelids. So after that I'm gonna go with the concealer. I am taking this Maybelline Fit Me concealer and I'm in the shade Fair. Okay, after concealing I am taking this Swiss Beauty Prime and Set primer plus mattifying setting powder. Now I am taking my Swiss Beauty Makeup Pro eyeshadow palette, and with the help of this I am just taking very neutral color. Okay, next is I am taking this light purple type of shade or sky blue shade. Next I am taking this small fluffy brush. I'm gonna take this dark blue shade. I'm just gonna apply it in the outer corner of my eyelids, just like that. This is in the another eye. इसको डिपॉजिट करके इसको बहुत लाइट हैंडेडली मैं से I'm taking the same shade, the dark blue shade. ओके अब मैं यही प्रोसेस अपने नेक्स्ट आई में जल्दी से कर लेती हूँ. ओके, आफ्टर दिस मेस आई एम जस्ट टेकिंग अ बिग फ्लफी ब्रश. ओके, एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही मेसी हो गया है. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट वेरी नाइसली. Okay, so now my eye makeup is almost done. Now let's just get into the liner part. I am taking this Maybelline new long lasting gel liner. और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो नायका हॉल का, तो उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे, तो मैं इसके साथ इन सब के रिव्यू भी आज शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में. आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूविंग द एक्सेस. Let's just do the another eye and I'll come back. Okay guys, so I'm back with my liner part. So I've applied my liner, and today I have applied a very bold liner. I really liked it. Plus its formulation is really very good. It's not smudgy, it's very easy to apply with the help of this applicator or a brush which comes along with this container. After this I am just gonna go and apply my lashes. So okay guys, I'm done with my eyes. So this is how my eyes look like after lashes. So let's just put some mascara. So I'm taking this Maybelline Colossal waterproof mascara,
and I'm just applying it. Okay, so my eye makeup is done. Now let's just go with the for the brows. So for my brows today I'm gonna use this Miss Claire eyebrow pencil, and I'm the shade 02 dark brown. So I have purchased this from Nykaa, as you guys know. So let's just try it out. I am trying it first time. सो देखते हैं ये ब्राउ पेंसिल कैसे वर्क करती है. सबसे पहले मैं जो इसके पीछे जो स्पूली ब्रश आता है उससे मैं अपने आईब्रोज को पहले ब्रश कर लूँगी. ओके, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग द पेंसिल, और मैं बहुत लाइट हैंडेडली कर रही हूँ बिकॉज हमें नहीं पता है कैसे वर्क करेगी. सो आई एम जस्ट डूइंग इट वेरी लाइट हैंडेडली. ओह वाओ, this is really very nice. I really liked it. Now brush. इससे जो मेरे लाइक बीच में जो पैचेस आ जाते हैं, कहीं अनइवन ब्राउन ना लगे, इसके लिए मैं एक बार अच्छे से ब्रश. Oh my god, see the difference. This is really nice. So let's quickly just do the another brow. Okay guys, so I'm back with my another brow with completing my another brow, and I have to give a rating for this pencil. So I would definitely say 9 out of 10. Why I'm deducting 1 point? Because of its texture. It's really nice, but मुझे थोड़ा ऐसे थोड़ा हार्ड लग रही है अपने ब्राउज. आई कैन फील द tightness of my brow hairs. But if I have to say about this pencil, so this eyebrow pencil is a very good pencil, and for 125 rupees I guess, yeah, for this price range is really very good eyebrow pencil. So let's start the face. So for my face, first of all I'm gonna start with primer, and this is the primer which I've got. This is Nykaa Pep Me Up Face Primer. This says Tone plus Smoothen plus Perfect. So let's just get started. So I'm taking little bit of the primer, just little bit, not a lot of amount, and I am gonna basically मैं इसको अपने जो T zone है उसी पे फोकस करके लगाऊंगी, because this is the area where I get pores the most. Let me just see. My pores are definitely minimized a lot, but not totally. But yeah, मेरे जो pores हैं बहुत ज़्यादा smoothen हो गए हैं, आप खुद देख सकते हैं. And my skin is feeling really very smooth. It's very smooth in the texture. Okay, after priming up my face, today I'm gonna correct my face, because ये मेरे चश्मे के से मुझे स्पॉट एक हो गया था, एक कट लग गया. आउच, ये मुझे कट लग गया था, और इसका एक मार्क भी है, प्लस माई डार्क सर्कल्स आर रियली बैड टुडे. सो आई एम गोना टेक दिस पिंक शेड फॉर माई डार्क सर्कल्स. My pimple spots, I am taking this green shade. Next is foundation. So for foundation, I am taking this Nykaa Skin Genius Sculpting Hydrating Foundation, and I am the shade 01 Pure Ivory. This is the product, guys. So let's just try it out. And I am just taking 1 to 2 drops, I guess, of this product, because I don't know the coverage of this foundation yet. So I'm directly taking in my brush, I'm just dragging it downwards. I think I need more foundation, because this is not enough, I guess. I need more foundation. और अब मैं इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से पहले स्प्रेड कर लेती हूँ, वरना सारा फाउंडेशन तो ब्रश में ही चले जाएगा. Dot it all over my face except the under area, because I'm gonna conceal it with the concealer.
The coverage is not very high. It's sheen to medium coverage. It's not very heavy coverage foundation because I have taken a lot of foundation. ब्लेंडर की हेल्प से इसे फाइनल टच दे के देखती हूँ कि कैसे वर्क करता है. So this foundation is good for medium coverage, but I was expecting कि ये कवरेज बहुत ज़्यादा देगा क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, but no, it's not giving that much coverage. Let's see जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएगा, तब ये कैसा लगता है. तो मैं अभी के लिए अपने आई कंसीलर पे थोड़ा फोकस करती हूँ. सो आई एम टेकिंग दिस NYX प्रोफेशनल मेकअप HD स्टूडियो फोटोजेनिक concealer corrector, okay, and I'm in the shade CW01. Honestly मैंने ये कल ट्राई किया था, बट कल मैंने इसे प्रॉपरली नहीं लगाया था. आज मैं इसे प्रॉपर लगा रही हूँ. सो आज ही मैं इसका रिव्यू अच्छे से दे पाऊँगी क्योंकि कल मैंने ऐसे ही जल्दी में लगा लिया था और मुझे नहीं पता लगा था ये कैसा वर्क करता. मैंने बहुत ही लाइट लगाया था बिकॉज मुझे डे टाइम में कहीं बाहर जाना था. Okay, let's see how it works. Okay, let me just quickly tell you one thing. ये बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है. The positives, I would say this concealer is really nice. It brightens up my under eye in just one stroke, which is really good. My Maybelline concealer didn't do that thing, which is a surprising thing for me. Next is compact. I'm not taking compact today. I'm gonna take the same Swiss Beauty setting thing. Face is done. Today I'm gonna bake my face taking a banana powder with the help of a dry beauty blender. It's been some seconds. I'm just taking it off because I'm not feeling very comfortable with this banana powder. Next is contour. So I am taking this the Balm Story palette and with the help of this मैं इसका मीडियम जो टोन है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, उसको लेकर और now for my nose contouring I am taking this angle type of brush. Okay, next is highlighter. I am taking Makeup Revolution Sunkiss highlighter. Just try with the brush. I forgot to mention that I have applied this Wadi lip balm already. I'm just gonna spray my face with a makeup fixer natural in Swiss Beauty one. The last product which I'm gonna use on my face is this Nykaa So Matte lipstick. Okay, I forgot to mention you the shade. So it's in the shade 18M Irish Coffee and it's a very good lipstick. मैं एक चीज़ भूल गई हूँ guys, जो मेरे को अभी जस्ट याद आया जब मैंने अपने को कैमरे में अच्छे से देखा. अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है. सो आई एम टेकिंग दिस वाइट काजल एंड इसको मैं अपने इनर वाटर लाइन पे लगाऊंगी क्योंकि ये जो ब्लू आई लुक है इसको में मुझे अपनी आईज को मेरी आईज ऑलरेडी बड़ी ही है बट मुझे इसको और बड़ा लुक देना है. नेक्स्ट इज ब्लू काजल एंड दिस इज फ्रॉम आई गेस या दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन. Now my makeup look is done with this kajal thing. Okay guys, so this is the final look which I came up with and I hope you guys really liked it. For more videos please subscribe to my channel.